Yes, so good morning, everyone, and welcome back to PPS theory sessions. We are continuing. Look, till now, in a second unit, we have already seen basic features of C language. We have gone through the C program structure. We have seen number of sections inside, and we have discussed all those sections where we can write what. A documentation section, linker section where we include all the header files, definition section where we define some constants, global declaration section, main section, subroutine section, and all. When we include header files, then what is header file? Then we have seen how we can comment inside a C program. We have seen data types, constants, variables, and so. And that's what we have covered. And in the same unit, second unit, which is fundamentals of C, still we need to cover operators, expressions, how expressions are evaluated. So when we have multiple operators in a single statement, how that will be evaluated. Then if we do have two different data type values inside the same expression, then there will be some kind of type conversion. So we need to understand implicit and explicit type conversions. Even if we have more than one operator, then which operator is going to be evaluated first? That is the precedence and associativity. And the last in this unit is IO functions. So how we can take input and how we can print output. So those will be the IO functions. Now that is what the remaining portion of this entire unit is. And let us have a look at operators now. So we'll start from the operators. Look, operator is nothing but a symbol. We all know that we when we write mathematical expression, we write some symbols, and those symbols has a special meaning. Like plus symbol has addition operator, we know that. Minus, a hyphen sign is a minus operator. Now cross sign, in general we say it's a multiplication, but there is no cross sign in keyboard. There is X, but that's the character. So instead of that, in most of the programming languages, multiplication will be the star. Okay, then slash is a division, and so on. So operator is nothing but a symbol, symbolic constant, we can say, inside a C programming language. So that symbol tells your computer to perform a certain mathematical or maybe a logical operation, right? Now it also contains variables around. So depending on the type of the operator, whether it is a binary operator, unary operator, or ternary operator, it will have one, two, or maybe three operands around it. So if it is a binary operator, then operator will be infix. In the middle position, you will have your operator, and left and right there will be two operands. If it is unary operator, then depending on the operator type, maybe first operator and second operand, or first operand and second operator. And if it is a ternary operator, you might not have seen this till now, but there is a ternary operator also, question mark and colon sign, where you need to have three operands in this sequence. So that is ternary operator also. It is something like checking a condition, and then based on the result of that condition, you will evaluate either step 2 or step 3, either this statement or this statement, based on the condition written in step 1. So that's ternary operator. We will see these operators in detail in this unit also, right? So operator is nothing but kind of a symbol which has a special meaning. It tells the computer to perform a certain mathematical or logical operation. And these operators
are always associated with some number of operands. Okay, to perform that operation, we need some values, and those values we will have from the operands. And depending on the number of operands they require, we do have mainly three types of operators: binary operator, unary operator, ternary operator. So what are the different operators available inside C? So in a C language, we have arithmetic operators, plus, minus, into, divide, and so on. We have relational operators like less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, and so. We have logical operators and or note, negation, right? Note is negation. We have assignment operators if we want to assign some value from one variable to the another variable. So we want to assign something from one place to another place. So we have assignment operators. We have increment and decrement operators. Just you want to increase or decrease the value of your operand by 1, then we have increment or decrement operator. We have conditional operators like equals to or not equals to. We have bitwise operators. Bitwise means it is going to perform that operation bit by bit, a single bit. Bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR are the operators. And we have some special operators like comma operator or a size of operator. So these are available kinds of operators in C language. Now let us start understanding all these operators one by one. Right? We need to cover a lengthy list of operators here. So let's go through it. Most of them are basic operators, so you'll directly quickly understand these operators and how it works and what it does, right? So first of all, let's have a look at arithmetic operators. Now, when we discuss arithmetic operators, we know that it is plus, minus, into, divide, and modulus. Modulus, percentage sign, is nothing but a reminder. When you divide one number with another, then whatever the remainder is going to be with you with modulus operator. But here you can have unary and binary both. So there is unary plus, that is defining the sign actually, and to define that sign, it is not going to do anything. It is simply going to multiply your number with positive 1. And there is a unary minus operator also, which is simply going to multiply your number with minus 1 to just define the sign, plus or minus. Okay, so those are unary operators. Remaining all, we have a binary operator: plus, minus, into, divide, and modulo. All these are binary operators. So if you want to add two numbers, a plus b, subtract one number from another, a minus b, multiply two numbers, a star b. Remember, multiple is actually star here. Okay, asterisk sign in your keyboard, number 8 key, okay, on the alphabetic keys. So that is star, which is multiplication, then slash divides a number, and then the modulo, which gives you the remainder from the division operation. So these are mathematical operators. We can use these operators anywhere inside our program whenever we want to perform that operation. If we want to add it, subtract it, multiply it, whatever we want to do, we can. So that's arithmetic operator. Next is the relational operator. Relational, we want to check whether it is equal or less than or greater than, or whether it is less or equal, greater or equal, and so on. So
we have double equals to sign. Remember, double equals to and single equals to sign both have a different meaning because both are different operator. When you say double equals to sign, it is actually relational operator. It is going to compare two values. When I write A double equals to B, it is actually going to check whether A is equals to B or not. If it is equal, it will return true. Otherwise, it will return false. Now, C language does not have a direct support of Boolean data, true and false. That's why what it will do is it will return one. Non-zero values is going to be considered as true. 0 is going to be considered as false. Okay. So that's why I've written return true into the bracket 1. So one non-zero value is true. So double equals to sign is to check whether A is equals to B or not. Not equals to sign. Now this is actually, you can read this one using like not equals to exclamation mark and then equals to sign. Exclamation mark in defines not, okay, negation. So this is actually not equals to. And if you want to check condition whether A is not equals to B, then you can write A exclamation mark equals to B. So if A and B are not equal, then it returns true, otherwise false. Then simply we have less than sign and greater than sign. A is less than B, A is greater than B. We can compare. Now, if we also want to check if A is less than or equals to B, then we can have less than sign equals to sign combined. Less equals to greater equals to. So that is going to check whether A is less than B, then it is true. If A is equals to B, then also it will be true. Otherwise, it will be false. Yeah. So 5 less than 3, that is false. 5 less than 6, it is true. 5 less than equals to 6, it is true. 5 less than equals to 5, it is also true. So these are few examples only to understand that operation. Okay. So 5 is less than 6, 5 is equals to 5. When I use less than equals to operator, both these conditions are true. So either it should be less than or equals to. And similarly, we have greater equals to sign also. So these are relational operators. Okay. Next is the logical operator. Now, logical and or not. Remember, single look, logical and has a double ampersand sign, and sign, ampersand sign, double ampersand. Single and sign is a bitwise operator. So remember, if you want to compare two values, truthness of two values, then you should have double ampersand sign here, logical and. Then the pipe operator, vertical line, is logical or. You will find this vertical line pipe operator just above the enter key. Okay, below the backspace and above the enter, just beside the curly closing bracket. That's where you will find this vertical line. Okay, so double pipe, double vertical line will give you logical or operation, and a single exclamation mark will give you negation or not operator. So logical and or not. So generally and or, these two are binary operators. It requires two operands. Negation is a unary operator, so it only requires one operand. And it is going to check the truthness of two operands. So A and B, let's say we have different
possibilities of A and B. A may be false, B may be false. A may be false, B may be true. So true, false, and true, true. We have two values for two operands. Total possibilities are 4. Now with these 4 possibilities, if we check A and B, now and indicates both must be true. Then and then your result will be true. So A and B, if both are true, only then your result will be true. So you can see your result true at a single place only when your A and B both are true. Otherwise, AND operation is false. Now, when we talk about OR operation, OR indicates either A is true or B is true or both are true. Any one, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो और ऑपरेशन ट्रू हो जाएगा. अगर दोनों फॉल्स हैं तभी आपका और ऑपरेशन फॉल्स होगा. So you can see that false result is only when your both A and B are false. Otherwise it is true. And the negation sign is just the opposite of whatever you have. So if your A is false, not A will be true. And if your A is true, not A will be false. Just the opposite. Right? So that's what the operators we have here. Just a minute. Okay, now let me go through some of the queries as you have written. Sorry. Yeah, unary plus means unary plus is nothing but a positive and negative indication. Okay, Soham. Unary plus and binary plus are same. No, unary plus is just positive negative indication. And to indicate that thing, what we do is we multiply our number with positive 1 or negative 1 to just have that sign. Whereas binary plus means it requires two operands, A and B, and it is going to add those two numbers. Unary plus is not going to add anything. Yeah, Hussein is saying it is just like get and not get. Yeah, logical and or and not. You can obviously, if you understand what is get, then from EC fundaments, you can understand this thing better. And difference between binary and unary. Look, binary is 2, unary is 1. That's it. That's the naming convention. Unary is 1. Binary bi, so it requires 2. That's it. Okay, Vyom. Yeah, so let's continue. So we have seen logical operators and or not. So we'll be going through a number of operators here, but you will remember all these operators eventually when you start using these operators in your program. धीरे धीरे आपको ये सब याद रह जाएगा. So don't worry. और ये ज़रूरत नहीं है कि आज के आज ही आपको सारे ऑपरेटर इन अ सिंगल शॉट याद रहने चाहिए. डोंट वरी, धीरे धीरे सारे ऑपरेटर्स जो हैं आपको याद रह जाएंगे. बिकॉज आप जब भी प्रोग्राम लिखोगे देयर विल बी ऑपरेटर्स. विदाउट ऑपरेटर आप कुछ लिख ही नहीं पाओगे. So when you start writing your program, you are going to use number of operators, and that's why you are going to remember these operators eventually, right? So next is the assignment operator. Simple, we want to assign one value. So single equals to sign. Now, as you can see, single equals to has a different meaning. It is assignment operator. Whereas double equals to has a different meaning, which is comparison. So make sure that when you want to compare two values, there will be double equals to sign. If you want to assign a value, then it will be having single equals to sign. So we have A equals to B here, where
actually right side value is going to be assigned to the left side value. Okay, so remember A equals to B is assignment, whereas A double equals to B is a comparison. These two differences you should always remember. Now this one is going to compare A and B and returns true or false based on the comparison. अगर equal है तो true, नहीं है तो false. True is 1, false is 0. But when we go for assignment, it is actually going to assign value of B to A. So right value is assigned to left side. Okay, so remember this thing. Right side value is going to be assigned to the left side. इस तरह से आपको याद रखना है. So whenever you are going to write any statement in your program, अगर आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो वो वैल्यू आप राइट साइड लिखोगे और जहां पे स्टोर करनी है वो वेरिएबल लेफ्ट साइड लिखोगे. Yeah, okay, so that's the assignment operator, single equals to sign. Now we do have few shorthand assignment operations in C, right? अगर आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद वो आंसर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना है, and if you are using the same variable in your mathematical operation, तो आप shorthand operation use कर सकते हो. Just like a equals to a plus 1, जहां पे स्टोर करना है उसी को मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज किया. Now in that case you can use shorthand operators like a plus equals to 1, a plus equals to 1. So plus equals to, minus equals to, into equals to, divide equals to, modulo equals to, all these are shorthand operators. So a equals to a plus 1, right? तो ये जो ऑपरेंड है आपका उसको कॉमन ले लो, ऑपरेटर जो है वो आगे आके देन असाइन होगा एंड योर फाइनल second operand will be on the right side, a plus equals to 1. Now same thing happens to any other complex operation also. अगर आप बाइनरी ऑपरेटर यूज कर रहे हो जिसमें लेफ्ट साइड ऑपरेंड जो है वही आपका वेरिएबल है जहां आंसर स्टोर करना है, तो आप ये कर सकते हो. ठीक है. Now which means, look, a equals to a divide 2, अगर इस तरह से है तो मैं लिख सकता हूं a divide equals to 2. लेकिन इससे उल्टा अगर है a equals to 2 divide a, now in this case I cannot write a divide equals to 2. Both these calculations are different. A divided by 2 and 2 divided by a, these two have different operation and this is not possible, remember. So ये आपको याद रखना है. शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आप तभी यूज कर सकते हो जब बाइनरी ऑपरेटर में लेफ्ट साइड ऑपरेंड जो है वही आपका असाइनमेंट ऑपरेंड है. Right? So there are here, as you can see, we have few examples. A equals to a multiply by something, so multiply equals to, a equals to a divide something, so divide equals to, a equals to a modulo something, so modulo equals to, and so on. These are shorthand operators.
Initially, if you are not much familiar with shorthand operators, then forget it. Just go for normal operations, simple assignment operators, and धीरे धीरे जैसे ही आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते जाओगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, आपको ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी अच्छे से याद रह जाएंगे. फाइन. Well, so that's the assignment operator. Then we have increment or decrement operators. Just as I said, if you want to increase your number by 1 or you want to decrease your number by 1 with 1 plus 1 or minus 1, then we have increment operator and a decrement operator. अब ये दोनों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो यूनरी ऑपरेटर है. फाइन, इट्स अ यूनरी ऑपरेटर, उसको एक ही ऑपरेंड की जरूरत है. रिमेंबर, व्हेन वी से यूनरी और बाइनरी, इट डिपेंड्स कि वो ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए. अगर एक ऑपरेंड चाहिए तो वो यूनरी है, अगर उसको 2 ऑपरेंड चाहिए तो वो बाइनरी ऑपरेटर है. नाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर रिक्वायर्स 1 ऑपरेंड, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनरी ऑपरेटर. लेकिन उसकी साइन डबल है. रिमेंबर, डबल प्लस या डबल माइनस, because single plus and single minus is already an arithmetic operator. इस वजह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को डबल प्लस और डबल माइनस की साइन दे दी. सो इट्स अ यूनरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. But depending on where you can write this operator corresponding to your operand, operand से आगे लिखो या operand के पीछे लिखो, based on the writing position, it has 2 different variations. अगर आगे लिखते हो तो वो prefix है, अगर operand के पीछे लिखते हो then it is postfix. So we do have prefix increment and postfix increment. अब प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों का एग्जीक्यूशन जो है वो अलग तरीके से होगा. दैट्स व्हाई वी हैव अ डिफरेंस हियर. ओके, नाउ इफ वी राइट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, मतलब ऑपरेंड जो है ए, उससे आगे लिख दिया प्लस प्लस साइन, तो वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू ऐड 1 टू द ऑपरेंड. वो पहले ए के अंदर एक ऐड करेगा, and then whatever answer you have, that answer is going to be assigned to the result. okay, एक ऐड करने के बाद जो आंसर मिला वो आंसर रिजल्ट में सेव होगा. whereas if you have a postfix increment, तो वो क्या करेगा? वो पहले a की वैल्यू रिजल्ट में सेव कर देगा एंड देन वो a को 1 से इंक्रीज करेगा. अगर पहले इंक्रीज करते हो तो प्रीफिक्स, लेकिन पहले असाइन करने के बाद इंक्रीज करते हो तो पोस्टफिक्स. एंड देन द सेम behavior of prefix decrement and postfix decrement, which is going to decrease your value by 1. Now let us understand this one with example. मान लो कि आपके पास एक वेरिएबल है m, जिसमें आपने वैल्यू 5 सेव की है. m is equals to 5. So m के अंदर क्या है? 5. अब मान लो कि अगर आप प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज करते हो प्लस प्लस एम. अब ये प्रीफिक्स है, मतलब वो क्या करेगा? पहले m की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, m विल बिकम 6 एंड देन फाइनल आंसर जो है 6, उसको y में स्टोर करेगा बिकॉज वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर. सो y विल आल्सो बिकम 6, राइट? अगर आपने m प्लस प्लस लिखा है विच इज पोस्टफिक्स, तो वो क्या करेगा? वो पहले m की वैल्यू को स्टोर कर देगा y में. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? इट इज 5. तो y की वैल्यू 5 सेव हो जाएगी और उसके बाद वो m को इंक्रीज करेगा. सो m विल बिकम 6. एनी हाउ आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट
ऑपरेटर जो है कोई एक ऑपरेंड पे लगाते हो तो वो इंक्रीज या डिक्रीज तो होगा ही, 5 से 6 या 5 से 4 तो 100% होगा, बिकॉज वी हैव अप्लाइड दिस ऑपरेटर। लेकिन प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का डिफरेंस ये है कि आप उसकी फाइनल वैल्यू स्टोर करते हो या प्रीवियस वैल्यू स्टोर करते हो। अगर वो प्रीफिक्स है तो उसकी फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर स्टोर होगा। अगर वो पोस्ट फिक्स है तो एक्चुअली उसकी ओरिजिनल वैल्यू आंसर में चली जाएगी, देन उसके अंदर ऑपरेशन होगा। सो if I do minus minus m, look, these are not continuous statements. अगर ये सारे स्टेटमेंट आप एक ही प्रोग्राम में लिखोगे तो अलग आंसर मिलेगा। लेट मी क्लैरिफाई दैट थिंग। ये सारे स्टेप जो है वो इंडिपेंडेंट है। ऑल दीज आर रेफरेंसिंग m equals to 5. ओके, देन एंड देन ओनली यू विल हैव दिस आंसर। हर बार मैं m equals to 5 को रेफरेंस ले रहा हूँ, रिमेंबर। सो इफ आई गो फॉर माइनस माइनस m, तो प्री डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, तो पहले डिक्रीज करो m की वैल्यू 4 और वो फाइनल आंसर y में स्टोर करो, सो y विल ऑल्सो बी 4। अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट करूं तो डिक्रीज करने से पहले मैं m को स्टोर कर लूंगा, सो m की वैल्यू जो है वो y में चली जाएगी, देन योर m विल बी डिक्रीज्ड, m becomes 4. Fine. So this is how increment and decrement works. Now where do we use this thing? Let's say you are counting your process. मान लो कि आप कोई एक इटरेटिव प्रोसेस कर रहे हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिपीटेटिव प्रोसेस आप कर रहे हो, और आपको वो काउंट करना है कि मैंने कितनी बार किया, राइट? देन ऑन योर काउंटर यू कैन यूज दिस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। फॉरवर्ड काउंटर या बैकवर्ड काउंटर है तो आप प्लस प्लस या माइनस माइनस यूज कर सकते हो। दैट्स द मेजर यूज ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज वन यूज, इट इज नॉट लिमिटेड टू। इसके अलावा भी आप कहीं सारी जगहों पे यूज कर सकते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। एंड धीरे धीरे जैसे ही हम आगे जाएंगे, इटरेशंस देखेंगे, लूप देखेंगे, तो वहाँ पे आप ये ऑपरेटर्स यूज करोगे। फाइन। So that's one thing. Now, what if you want to increase your number by not 1 but 2, 3, 4, 5 and so on? Well, this increment or decrement operator only increases or decreases by 1. अगर 2, 3, 4 से करना है तो फिर आपको maybe shorthand operator use करना पड़ेगा. So when you write this thing, a equals to a plus 1, तो आपने a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया। You can also write a plus equals to 1, then also you have increased value of a by 1. और इससे भी अच्छा है आप ये लिख लो a plus plus या तो फिर plus plus a, depending on your need, pre and post. Fine. So ये सारे स्टेटमेंट जो है वो इक्वल है, all these are equal. अब यहाँ पे 1 की जगह 2 से इंक्रीज करना है तो आप लिख सकते हो a equals to a plus 2 या तो फिर a प्लस इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे a प्लस 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 एक तरह से नहीं कर सकता, लेकिन मान लो कि आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना ही चाहते हो, देन यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज प्लस प्लस a एक बार इंक्रीज होगा, उसको अगेन प्लस प्लस अप्लाई करो तो दूसरी बार इंक्रीज होगा। बट दिस इज समवॉट कॉम्प्लेक्स, instead of that going for this way is very much simple one. Yeah, so डिपेंडिंग ऑन योर नीड 2 से 3 से 4 से अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर पे जाओ। 1 से इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो प्रेफरेबल वे इज हैविंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। फाइन। Well, Venus is asking if we add more plus signs. Well, look, we are discussing about operators, and operators are always predefined, and there is nothing like triple plus sign. Okay, ऐसा कुछ नहीं है आपकी लैंग्वेज में, देयर इज नथिंग लाइक ट्रिपल प्लस साइन।
this is predefined. So set of operators are already there and we need to use it. आप कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर लेके आओ और आप बोल दो कि मैथ्स में ये साइन का मतलब ये हो जाएगा, वो यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं होगा, राइट? So we cannot go for any kind of operators. We need to use predefined operators only. Fine. So, well, that is the discussion on increment or decrement operators. Janil, that's what I was saying. आप ट्रिपल प्लस साइन यूज नहीं कर सकते हो. It is not a predefined operator anywhere in this programming language. ट्रिपल प्लस अगर करते हो तो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा. You can have something like a plus 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 b, but इसका मीनिंग, this is ambiguous actually. इसको आप इस तरह से कंसिडर करोगे a plus plus करके, then you have binary plus with b, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो increment of b and then binary plus with a. So there is an ambiguity. और ये ambiguity C लैंग्वेज जो है वो रिजॉल्व करेगा कैसे, जब हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी देखेंगे. एट दैट टाइम यू विल बी क्लियर. आप अपने प्रोग्राम में इस तरह से लिख सकते हो a प्लस 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 बी, आपको एरर नहीं मिलेगा. लेकिन इसका आंसर ये नहीं है कि a को 2 से इंक्रीज किया. एक्चुअली a को इंक्रीज करके उसमें b ऐड करेगा आपका प्रोग्राम. So that's how it will be executed, and it will be much more clear when we see evaluation of expression with the help of associativity and the precedence. वो हमारे यूनिट में as a topic है. So just be patient, we will consider that thing. Okay, Hussein is asking, can we have two operators at the same time and on the same problem? Well, you can assign number of operators. Look, you can always have any kind of a complex expression if you want to. A plus B multiplied by D minus C. अब मान लो कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट भी कर दिया, मॉड्यूलो E multiply by F हो सकता है. नाउ दिस इज योर एंटायर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका आंसर आप कहीं पे स्टोर करोगे. इट कैन बी एक सिंगल लाइन में आप एक से ज्यादा ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो. Now that's the reason we need to understand how this expression will be evaluated. Now this is called entire expression. एक बार हम सारे ऑपरेटर्स देख लें, उसके बाद हम एक्सप्रेशन देखेंगे, and then we will try to understand कि ये expression evaluate कैसे होगा. Fine. So let's get back to operators. Yeah. So increment and decrement operator. Then we have conditional operators. Okay. Conditional operator is nothing but ternary operator, question mark and double colon. Sorry, single colon sign. So the syntax of it is, first you are going to have your condition, then you will write question mark. So it is something like, is this condition true? You are asking a question. Well, if it is true, then you execute statement 1. And if that condition is false, then you execute statement 2. So statement 1 or 2 के बीच में आप colon sign लिखोगे, and at the end of your entire statement आप semicolon लिखोगे. So let's have a look at example. A greater than B. Now this is my condition. Is A greater than B? I'm asking a question, so there is a question mark. अगर A की वैल्यू B से ग्रेटर है तो आप प्रिंट करोगे एक मैसेज, A is maximum. बट लेट्स से अगर A की वैल्यू B से ग्रेटर नहीं है
तो आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप सेकंड स्टेटमेंट पे जाओगे, मतलब आप प्रिंट करोगे B is maximum. So just imagine how easier is to write one conditional flow in C program with a single statement. हमने इसका algorithm देखा था, finding a maximum value from two numbers, right? वहां पे कुछ हमने इस तरह से लिखा था कि पहले हम चेक करेंगे if A is greater than B, then we print A, else we print B. Now this is the same thing we are writing here. A greater than B, question mark, print A is your statement 1, colon, print B is your statement 2, and you are done with entire statement, so semicolon at the end. So this is what the ternary operator we have. Question mark, colon, semicolon simply indicates the end of the statement. Okay. Now we can also write this thing with if else, and that's the conditional flow. In third unit we are going to have a look at it, but let me just show you right now. If A greater than B, print A, else print B. Now this is also equivalent. You can also go for this way. Now this is conditional flow. Third unit में हम ये सीखेंगे. So why do we have these two different ways of writing? अब एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आपको लिखने हैं तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट वाला फ्लो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप ये टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, which means have a look at the syntax. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, राइट? वो सिंगल स्टेटमेंट है। अगर सिंगल स्टेटमेंट यूज करना है तो टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करने हो तो आप टर्नरी यूज नहीं कर पाओगे, आपको कर्ली ब्रैकेट वाला फ्लो लिखना पड़ेगा, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट in third unit. So that's conditional operator. We have a number of bitwise operators, bitwise and, bitwise or, bitwise exclusive or. Then we have a left shift, right shift, one's complement. Some of these you might have learned in your schooling part, mathematics. Look, when I say bitwise, so it is going to make that and or exclusive or conditions bit by bit. So let's say if you want to do let's say 3 bitwise and 2, देन बिटवाइज अगर जाना है तो सबसे पहले तो 3 और 2 जो डेसिमल नंबर है उसको आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, राइट? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 3 इज 0011 और 2 जो है वो 0010 हो जाएगा. 4 डिजिट में अगर जाता हूं देन, 8 डिजिट में जाता हूं देन let's go for 8-bit number system, 8-bit number system. So this is actually 3 and this one is 2, binary equivalent. अब bit by bit and operation करो. Look, bit by bit. So and operation क्या बोलता है? अगर दोनों 1 है तो ही 1 होगा, otherwise 0. So this is going to be your result. Okay. So we have done it bit by bit, 0 0 then 0, 1 1 तभी 1 and so on, right? So
that's the bit by bit operation you do. Shift operation भी कुछ इस तरह से होगा. अगर look, we have shift left, shift right. Double less than sign indicates shift left. Double greater than sign, shift right. So if something, you have number like this one, let's say, अगर इस तरह का कोई बाइनरी नंबर है आपके पास, इसको अगर आप शिफ्ट लेफ्ट करते हो तो लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो हटा दो, सो भूल जाओ उसको. देन एक एक करके आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करते जाओगे सारे बिट्स को. सो दैट विल बी 0 0 1 0 1 0 0 1 1. और राइट मोस्ट जगह जो आपके पास खाली रहेगी वहां पे आप एक 0 ऐड कर दो. Now that is what the shift left is. Similarly, you can go for shift right. Or one's complement is nothing but bit by bit negation sign. 1 है तो 0 करो, 0 है तो 1 करो. Shift left और shift right is nothing but आप सारा नंबर जो है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करते जाओगे. So something like, if let me explain it with boxy numbers. 1 0 1 0 1. अगर इसे मुझे शिफ्ट लेफ्ट करना हो तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट लेफ्ट करना हो देन लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है उसको भूल जाओ. सो ये गया. देन आपके सारे नंबर्स जो है वो एक एक ब्लॉक लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे. 1 0 1 सॉरी 0 1 0 1 शिफ्ट कर दिए लेफ्ट साइड एक एक ब्लॉक. एंड देन जो राइट मोस्ट ब्लॉक आपका खाली है वहां पे आप 0 ऐड कर दोगे एक्स्ट्रा. सो दैट इज शिफ्ट लेफ्ट. एक एक बिट जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. फाइन. सो दीज आर all these operators are working on bits, binary bits, and that's why called bitwise operators. उसको एंड करो और करो, एक्सक्लूसिव और करो, शिफ्ट लेफ्ट करो, शिफ्ट राइट करो, या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1 का 0 और 0 का 1 हो जाएगा. So these are bitwise operators. In normal use, okay, in simple programs, you will not find use of these bitwise operators. आप अपने सारे प्रोग्राम्स जो है, ये सेमेस्टर के जितने भी प्रोग्राम्स हैं अपने लिस्ट में, उनमें से एक भी प्रोग्राम के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज नहीं दिखेगा आपको. Now these operators are very much important when you want to work with complex things or machine level things, when you want to work on binary numbers directly. ओके या तो फिर कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जो बिट ऑपरेशंस पे वर्क करता हो, देन एंड देन ओनली यू विल रिक्वायर these operators. Okay, yeah, so that's the bitwise operator. And let's have a look at the last, spatial operators. Now there are two spatial operators. One is comma and the other one is size of. Let's have a look at comma first. It is actually going to combine similar kind of related expressions together. It is going to link related expressions together. Like पहले x के अंदर एक वैल्यू डालो, देन y के अंदर एक वैल्यू डालो, और देन x और y पे कोई ऑपरेशन करो. Now all these three statements are related. x की वैल्यू सेव की, y की वैल्यू सेव की, और उसके बाद x y दोनों के ऊपर एक ऑपरेटर लगा दिया. Now when you say these three statements are related to each other, तो आप उन सब को कॉमा से लिंक कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो. Now in this case what it is going to do is, पहले x की वैल्यू स्टोर करेगा, y की वैल्यू स्टोर करेगा, देन x प्लस वाई करेगा, और फाइनली जो आंसर है x प्लस वाई का, वो आंसर z में सेव हो जाएगा. So if you wanna combine your
related expressions, then you can use comma operator. This is a use, but generally हम कहाँ पे इसको यूज करेंगे? When we are declaring multiple variables, integer टाइप का एक वेरिएबल a डिक्लेयर किया, अब सेम वे इंटीजर टाइप का सेकंड वेरिएबल b अगर मुझे डिक्लेयर करना है, ये दोनों रिलेटेड है ना, डिक्लेरेशन ही है दोनों. वेल इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज a कॉमा b कर दूंगा. सो हियर आई हैव यूज्ड कॉमा ऑपरेटर to apply this data type to both the variables. So that's where majorly we will be using comma operator, but you can use this comma operator in this way also, right? And then the size of operator. Yes, Pankaj, size of is a keyword, but actually it is an operator. Look, keyword क्या होगा? Inbuilt जो एक word define करके रख लिया वो keyword है. Now that doesn't mean कि वो operator नहीं हो सकता, वो data type नहीं हो सकता. Look, integer is keyword, but it is a data type. Same way, size of is a keyword, but it is a operator. Okay. Now there are number of keywords which are data types. There are number of keywords which are flow control indicators. If, else, switch, case, break, continue. हम देखेंगे. There are number of keywords which are also used as iterative flow controls, for, do, while, and so on. So जो वर्ड पहले से डिफाइंड है उसको कीवर्ड बोलते हैं, लेकिन उसका यूज कहीं ना कहीं प्रोग्राम में किसी ना किसी तरह से होता होगा. उसको डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हो अगर वो डेटा टाइप डिफाइन करता है, उसको ऑपरेटर की तरह यूज कर सकते हो अगर वो ऑपरेटर डिफाइन करता है. सो that's the thing. Size of is a keyword and it is an operator. Size of सिंगल वर्ड है. रिमेंबर देयर इज नो स्पेस इन बिटवीन, बीच में स्पेस नहीं है, सब याद रखेंगे. नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज इट रिक्वायर्स वन ऑपरेंड. उसको एक ऑपरेंड चाहिए और कैसे चाहिए? साइज ऑफ, देन ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर उसको एक ऑपरेंड चाहिए. नाउ दैट ऑपरेंड मे बी वेरिएबल, मे बी कांस्टेंट, or maybe a data type itself. What it is going to do is it is going to give you the size of that operand. अगर वो वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को कितने बाइट्स चाहिए मेमोरी के अंदर, उसकी साइज देगा. अगर वो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट को कितने बाइट्स चाहिए होंगे मेमोरी में, वो साइज देगा. अगर वो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए कितने बाइट्स मेमोरी में ज़रूरत पड़ेगी, वो नंबर ऑफ बाइट्स रिटर्न करेगा. So you can write size of a. Now let's consider a is a variable, और अगर वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो उसकी साइज 2 बाइट्स हो जाएगी. We have seen size of all the data types already. Size of 2.5. Now 2.5 is a constant, तो ये क्या करेगा? कांस्टेंट की साइज देगा. लेकिन 2.5 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सो अगर वो फ्लॉट है तो उसे 4 बाइट की जरूरत पड़ेगी. Now in this it is going to consider the smallest size. 2.5 को आप डबल भी बोल सकते हो, लॉन्ग डबल भी बोल सकते हो, लेकिन वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू कंसिडर द स्मॉलेस्ट साइज हियर. अगर आप साइज ऑफ डबल डेटा टाइप डायरेक्ट बोलते हो तो उसको 8 बाइट चाहिए. सो वो आपको क्या बोलेगा? इट विल रिटर्न 8. Well, no. Shubham is asking, is there any difference between constant float number and a variable float number? No. Constant हो या variable हो, साइज में कोई डिफरेंस नहीं होगा. द डिफरेंस इज, अगर वो कांस्टेंट है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, अगर वो वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू चेंज हो पाएगी. फाइन. यूसुफ इज सेइंग व्हाई डू वी नीड टू चेक द साइज. वेल, ये तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि ए एक फ्लोट नंबर या डबल की साइज आप चेक करो. टू अंडरस्टैंड, अभी के लिए मैंने ये एग्जांपल दिए.
when we see user defined data types, okay, when we create our own data type, तब हमें ये size of operator जो है वो ज़्यादा helpful होगा. अगर मैंने खुद का एक data type बनाया है तो मैं उस data type की size check कर पाऊंगा using size of. एंड साइज अगर एक बार मुझे मिल गई तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है उस डेटा टाइप के मेरे पास, तो हर एक वेरिएबल की साइज क्या रहेगी, सो दैट आई कैन जंप टू द नेक्स्ट वेरिएबल इन माय मेमोरी में एक के बाद एक अगर सारे वेरिएबल्स मैंने स्टोर किए हैं तो मैं जंप कर सकता हूँ फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड पे यूजिंग साइज. ओके. Yeah, so that's what the spatial operators are. Now we'll stop here, and in the next lecture we are going to see expressions. So that's it, guys. Thank you for being part of this session here. And we have completed half of the part of second unit. I'm going to upload that half part PPT today in the e-content. And when we are done with the second half, I'll also upload this PPT. Yeah, thank you everyone, and see you in the next lecture. Thank you.